Hello dear friends, how are you? Welcome back all of you. This is the video number 4 of chapter number 8, motion of class 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन लाइक रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड टाइम एंड वेलोसिटी एंड टाइम. तो टुडेज लेक्चर इक्वेशन ऑफ मोशन. Equation of motion by graphical method. Here equation of motion, three equation there. First equation, v is equal to u plus at. Second equation, s is equal to u into t plus 1 by 2 at square. Third, 2as is equal to v square minus u square. Here first equation give relation between velocity and time. Second equation give relation between the position and time. Third relation give relation between the position and velocity. So one by one all the three equations are derived with graphical method. So first equation, here u is represented. Here u is initial velocity of object, v final velocity of object, s is a distance covered by an object, t is a time. So here, okay, one thing a is remaining. A is acceleration of an object. Now if we plot the graph, suppose any object moving with uniform acceleration, and here u is not equal to 0. Here in this case, if solving the equation, here u is initial velocity is not equal to 0 at initial time. So graph is like this. So at initial stage, at point O, object have some velocity. Here the graph is versus time and speed or velocity. So here at initial stage, time is equal to 0, object A have some initial velocity u. Now after some time of interval, object is
reach at position B with uniform acceleration at B. So time interval is at time t2 and here time is t1. Now this point is denoted by C, and if we draw parallel line to x-axis, point is called D and one line is another line from B intersect at y-axis is called point E. So here we have to derive the equation number 1. So let's here initial velocity of object at A is equal to U. So OA here at A, so OA is equal to U. Final velocity of object CB is V. CB. Here A to B is a uniform acceleration. So here we have to find BD. So from graph BC is equal to BD plus CD. So BD is equal to BC minus CD. Here BC is what? Final velocity. जो स्पीड थी वो y एक्सिस पे थी, तो v इज अ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. So instead of BC we put V and CD and AO is a parallel, so AO is equal to CD, so CD is equal to U, so BD is equal to V minus U, says equation number 1 in Roman letter. Now according to definition of acceleration, A is equal to final velocity minus initial velocity divided by 2. Here final velocity BC minus initial velocity AO by 2. So here BC as it is minus AO, instead of AO we write down CD. BC minus CD is equal to BD.
by 2. So here A is equal to BD by 2. Sorry, here we have to take total time. So total time is OC, and OC is equal to AD, and AD is equal to T, total time, T2 minus T1. OC is equal to T2 minus T1 is equal to T, total time taken. So BD is equal to T. So from here BD is equal to A into T, says equation number second. From here equation 1 and second, from equation 1 and second we will get here the value of BD put in equation number 1. So AT is equal to V minus U. Now we make V as a subject, so U plus AT, and we get the equation number 1. It gives the relation between the velocity and time. Velocity and time. Now second equation, it is the give relation between the position and time. So we already discussed in previous lecture कि when we draw graph of speed versus time, the area covered by the acceleration, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है उसके नीचे का जो एरिया जो होता है कवर करता है, उससे हमको क्या मिलता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एरिया है पूरा ओ ए बी एन सी का वो हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ फॉर second relation, position versus time. Here we have to find out area of OA B C. So here we can clearly say कि area of OABC is equal to, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था we have to find out S is equal to area of OABC. So now here S is equal to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD. Here area of rectangle कैसे मिलेगा, OA into AD, and here area of triangle, जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है वो कैसा है, रेक्टेंगल ट्राइंगल. सो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 base into height. So here base is AD and height is BD.
Now here OA is equal to U AD. जो AD था हमारा वो क्या था T2 minus T1 is equal to T total time. So AD is equal to T. Here also AD is equal to T and BD is equal to, from the above equation, V minus U is equal to, instead of U we write down AT BD V minus U. Now here we substitute the value. OA is equal to U into T plus 1 by half T, and here BD is equal to V minus U, and V minus U is equal to, जो इक्वेशन था वहां पे V is equal to U plus AT, V minus U is equal to BD is equal to AT. From here T is equal to V minus U by T. Sorry, direct we get V is equal to AT from equation 1. Here from equation 1, V minus U2 is equal to AT. So final equation UT plus 1 half T into T square. So A into T square is equal to S. So equation number second give relation between the position and time. Now third, equation of position and velocity. It is the equation number 2 by graphical method. जो पूरा शेडेड रीजन था ये वो पूरे का पूरा क्या आएगा U into T plus 1 half AT square. Now third one, relation between velocity and position. Here area of trapezium, जो इस केस में जो ट्रेपेजियम बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OA BC is equal to OA into BC, sorry, OA plus BC into OC divided by 2. Here OA, from the graph OA is equal to U, BC is equal to V, OC is equal to time on x-axis. Put this value in above equation. OA is equal to U plus BC is equal to V and OC is equal to T divided by 2. Now again from the equation 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 v is equal to u plus 80, v minus u is equal to 80. Now here we have to make subject t, so v minus u by a is equal to t. Put this equation here, so u plus v into v minus u by 2 as it is and 2 from a from here. Now if we solve u plus v into v minus u, so u into v, u into u minus u, u into v and v into v, v square, ये कैंसिल हो जाएगा. So here we will get v square minus u square by 2a. जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था वो क्या देता था हमको इक्वेशन s, so here s is equal to, so 2as is equal to v square minus u square. This equation give relation between the position and velocity. Now with the help of these three equations we solve in next lecture many numericals हम solve करेंगे जो एग्जाम में भी important है. Now the last topic of this chapter, circular motion. Circular motion. आपने कभी वो जो छोटे बच्चे खेलते हैं, एक थ्रेड लेना है और उसके एंड पे हमको एक क्रॉप को टाइट कर देना है, उसके बाद हमको उसको ऐसे घुमाना है. जब हम उसके घुमाएंगे तब उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा. Suppose कि that is the radius of thread and here suppose कि there is a small crop. If we rotate in circular motion in clockwise direction, so ये कुछ इस तरह से मोशन में आएगा. ये सेंटर, तो हमें पता है कि जब वो ऐसे हम घुमाएंगे तो ये सर्कुलर ऐसा रोटेट करेगा. जो थ्रेड है वो तो फिक्स थी, ये उससे ज्यादा नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सर्कुलर मोशन में आएगा और मोशन में होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी. तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज चेंज. सपोज कि कोई एथलीट है, कोई रनिंग कर रहा है, सपोज कि स्क्वायर है वहां पे रनिंग कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. उसने यहां से स्टार्ट किया स्क्वायर में, तो स्क्वायर है वो 4 साइड, तो वो वेलोसिटी कितनी बार, डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा? उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट चेंज डायरेक्शन. जब वो स्क्वायर पे रनिंग कर रहा होता तो कितनी बार वो डायरेक्शन चेंज करेगा? 4 टाइम्स, बिकॉज स्क्वायर है वो 4 साइड. सपोज हेक्सागोनल शेप होगा और कोई एथलीट यहां से रनिंग स्टार्ट करता है तो वो पहले इतना रनिंग करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा.
थर्ड टाइम डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सिक्स टाइम। तो मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन वो इसमें 6 बार चेंज कर रहा है। सपोज कि ऑक्टागोनल होगा, 8 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सपोज कि ऑक्टागोनल टाइप का है वो, तो 8 टाइम वो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी है वो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। सो हम बोल सकते हैं कि उसका डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है। जो जितने भी पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड से रनिंग कर रहा है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सपोज कि ऐसे हम जो साइड थी वो बढ़ाते गए, तो वन टाइम इनफाइनाइट साइड हम कर दे। जब इनफाइनाइट करेंगे तो क्या क्रिएट होगा? सर्कल। सपोज कि एथलेटिक अभी यहाँ पे है, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम उसकी क्या हुई? कंटिन्यूस डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, कंटिन्यू डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे भी सेम यही प्रिंसिपल यूज होगा। और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ जब हम उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो हमारे उसमें फोर्स कौन अप्लाई करता है? तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें, हमारा हाथ से हम उसको घुमाते हैं ऐसे। तो जो हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल force. Due to centripetal force, it rotate in circular motion. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि उसको एक रोटेशन में रखने की ट्राई करता है। बट व्हेन एनी इंस्टेंट इफ वी, हम उसको छोड़ देते हैं, जब वहां से रस्सी को छोड़ दिया तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? सोचो, ऐसे हम घुमाते हैं और सपोज कि इस पोजीशन पे हमने, और जो थ्रेड थी वो हमें हाथ से छोड़ दिया, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? जो वहां इस पॉइंट पे सपोज के होगे, तो यहाँ पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जाएगी। हमने पहले ही बोला था कि जो हम रोटेट कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन थी? क्लॉकवाइज। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी। सपोज कि इस पॉइंट पे आके हमने छोड़ दिया थ्रेड को, इस पॉइंट से हमने रिलीज कर दिया, तो वो साउथ डायरेक्शन में होगा, जाएगा। सपोज कि यहाँ पे हमने उसको ऐसे घुमाया और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में वो जाएगी। अभी कितनी दूर जाएगी वो कैसे डिपेंड होगा? वो आपके फोर्स पे डिपेंडेंट होगा कि आपको किसको मारना है। ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए, किसी को लग जाता है। एग्जाम्पल है इसलिए हम बता रहे। तो ये था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है? फिर से जो वन इंपॉर्टेंट पार्ट था, सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट होता है। सेकंड थिंग कि वहां पे जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है एवरी टाइम चेंज होती है। नाउ हम अगले लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।